लास्ट क्लास में देखते हैं क्या होगा। तो स्टार्टेड विद इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर की ग्राफ करा के देन वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन फर्स्ट ऑर्डर। Please write the heading graphs for first order. Okay, so but you know what, like पता नहीं इंडिया में कहाँ कहाँ अभी खराब है, but mostly in India, like internet is very good in India after Jio. Okay, fine. Were you able to watch the recordings? So, were you able to watch the recordings? Okay, then we'll not be having too much problems here. तो दीजा आप भी बहुत दिन के बाद आ गई हैं। हाँ, पता नहीं अगर नहीं कौन करेंगी है। Let's see. Graphs for first order reaction. So as I have said, each and every graph will be made from a particular equation. The first equation that we have is R. It is equal to the rate constant K into the concentration of A. What is the amount of A you are taking for the reaction? So R is equal to K into A. I hope you can see that it is going to follow Y is equal to mx type of graph. Y is equal to mx. So Y is equal to mx. It passes through the origin. It passes through the origin. यहाँ पे आपके पास rate है, and here you are having the concentration, the initial concentration of A that you are going to take. But if you take more A, then the rate will be faster, and the slope here it is equal to the rate constant K. Now, the second graph, it is quite important to have. The second graph, here we are going to use two different equations. Okay? और दोनों के लिए जो ग्राफ बनेगा, the graph is going to be same. The difference will be in the y-axis and the slope. आराम से समझ में आ जाएगा. You don't have to take any tension. The graph is ln a naught is equal to ln a minus ln a naught minus a w. Make it like this. Wait a second. ln a, it is equal to ln a naught minus kt. दूसरा जो है आपका, this is for log a, it is equal to log a naught minus k upon 2.303 into p. Now both of these are going to be having slope intercept type of graph. What are the things that is going to change? The thing that is going to change in these graphs is that the y-axis. If you see, this is my y is equal to mx plus c. Y, it is equal to the x-axis I will be having. So whatever is with the x-axis, that will be m, and this ln a naught or log a naught, that will be c. So in the y-axis, if you are having the plot, कैसे बनेगा plot of पहले बना देते हैं. The plot is going to be like this, sir. Why? Because intercept, the y-intercept is positive. The slope in both the cases is negative. है ना? आप m को देख सकते हैं, it is minus k or minus k upon 2.30. ठीक है? So for both of these things, I will say that if the graph is of transmitter, if the graph is between ln a versus time, then the slope will be, यहाँ का slope होगा, the slope will be
minus a. But if the graph is between log a mod, then the slope will change and the slope will become minus a upon 2.30. Please copy this down. Raise your hand. Please raise your hand instead of writing. Sir, why should be log A, right? Yeah, log in, log in. अच्छा तो और किसी को बताइए देता ना भूलिएगा this y intercept ये intercept होगा this will be either ln a naught or it will be log a naught है depending on what is on the y axis अगर y axis में ln a है then it will be ln a naught if the y axis is log a it will be log a naught है ना दो ग्राफ अलग से बनाना पड़ता बट एक नहीं ग्राफ बन जाएगा एक वो भी understand this waiting for Khadija, Srika and Sofa. सिद्दीका तो अभी अभी आई है सिद्दीका अभी छोड़ दीजिए इसको ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिद्दीका अभी मत लिखिए आप ठीक है सिद्दीका ओके सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जगह छोड़ दीजिए आई विल वेट लाइक 5 और ठीक है ले लिया आपने स्क्रीनशॉट the third graph that we are going to see for the first order reaction it is going to be for again two equations ln a naught by a it is equal to kt and the same plot will also be valid for log a naught by a that is equal to kt upon 2.303 so this whole thing is y ये पूरा ही क्या है this whole thing is y and this is x so y is equal to mx type of graph will be made for both of these expression and यहाँ पे आपके पास क्या होगा if we are having if the graph is between ln a naught by a and time then the slope will be k but if the graph is between log a naught by a then the slope will be different then the slope will be a by 2.30 and y is equal to mx type of graph the plot is it passes through the origin इसको लिख लीजिए सिद्दीका all of you guys please write this down raise your hand once you are done
You guys need to memorize these plots, okay? Because ये plot ऐसी कैसी आ जाता है एग्जाम में, बोलता है identify to what is the order of this type of reaction. For a reaction, the graph between log A naught versus time is this much. It's that. It's this. Identify the order of reaction. ठीक है? तो इसको बार 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो उसके बाद इसको देखते रहिएगा, फिर जब एग्जाम में अगर रिवाइज करते रहिएगा तो फिर ठीक रहेगा. Waiting for Soha and get him. Just waiting for Soha now. Soha, please raise your hand once you're done. Photograph लिखेगा E half versus A naught. Versus तुम क्या लिखा है? What is the equation? E half, it is equal to 0.693 divided by K. Right? And the graph here we have to plot is between what? How the T half is dependent on the initial concentration A naught. As you can see, T half is not depending on initial concentration. So no matter what the initial concentration ज़्यादा हो कम हो whatever it is. अब देखिए initial concentration is increasing, but T half is not changing. ठीक है? So this is the plot for what is also very important plot. Okay, this is the plot for T half versus N, and for what? For the first order reaction. Okay, this is quite important. देखिए एक तो यहाँ पे नोट लिख लीजिए, नोट क्या रिमाइंडर टाइप का है आपके लिए, ठीक है. We know that the formula of P half, it is equal to 0.693 divided by K. Okay. So, and you have to memorize this formula such that अगर किसी सवाल में K दिया है, that means you know the T half. वो पूछेंगे ही नहीं T half. They will never ask the T half. They will assume that वो आपको T half नहीं देके क्या देंगे? They will always give you the K. K से आपको पहले T half निकालना पड़ेगा, ठीक है? और what they will do? They will give you the T half and then, और उस सवाल में T half का कोई काम नहीं, उस सवाल में काम किसका है? K का काम है. Why they have given T half? So that you have to calculate K. ठीक है? So T half is equal to 0.693 by K. Because of this reaction, if T half is given, then K is also given for first order reaction. Is this clear? Yes or no? Please tell me, guys. ये समझ में आया ना सबको हम क्या कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. बाकी को
बाकी लोग का समझ में आया ऐसा? यस सर, यस सर। है ना? ठीक है, यहाँ पर अगर दिया हुआ है आपको, तो आप ये मान के चलिए कि आपको के भी दिया हुआ है। अगर आपको के दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, और एग्जाम्पल्स हमने नहीं लिखा है ना यहाँ पे। एग्जाम्पल्स पर लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज ऑल रेडियो एक्टिव, ऑल रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन, और रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं इसको, डीके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, we're going to follow first order kinetics, and hydrogenation is also hydrogenation of ethene, और लिखिए आप decomposition of N2O5 and NO2, decomposition। ठीक है, रिसर्च एंड आंसर एक सवाल करेंगे। तो जस्ट वेटिंग फॉर यू। See, we are going to do a few questions, and all of these questions are going to be of different types. You will be learning something new. Apart from the expression or the equation that we are having, जो आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अलावा भी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला सवाल है, and I will be doing all of these questions. You need to practice the same questions once you go home and then do the homeworks. ठीक है, तो आराम से सब कुछ हो जाएगा, like NCERT questions, previous past year questions, so all of those things will be done if you do and practice these few questions that I'm doing here. Please write the value of rate constant for a reaction, for a reaction is 60-second inverse. Calculate the time taken. Calculate the time taken for 5 gram of reactant to get reduced to 3 grams. ठीक है, सबसे पहले जो आपके पास इस तरह के जब भी सवाल आएंगे ना, व्हाट इज द टाइम टेकन, टाइम का इन्वॉल्वमेंट कहीं भी आएगा ना, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। In order to choose an integrated rate expression, you have to first of all think whether it is zero order reaction or first order reaction. चलिए कौन बताएगा whether it is zero order reaction or first order reaction? जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, कैसे पता चलेगा, तो कौन बताएगा? व्हाट इज द ऑर्डर? फर्स्ट। फर्स्ट ऑर्डर Sir, फर्स्ट कैसे फर्स्ट बताएंगे? हाउ? because the rate constant of a reaction is 60 S minus 1. From the unit of rate constant we can identify that this is the first order kinetics. ठीक है, this is the first order reaction. ठीक है, ये चीज आपको नहीं पता चला है ना, इसमें आप it has this question specific information.
कि आपको यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया है, क्या दिया है, रेट कांस्टेंट की यूनिट दी गई है। फ्रॉम द रेट कांस्टेंट यूनिट यू कैन कैलकुलेट दैट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो फ्रॉम यूनिट ऑफ, हम लिख दे रहे सारी चीजें बिकॉज वंस यू रीड ना, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है इन द बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर स्कूल पेपर, हमें फिर से लिखने बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन देन यू विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम यूनिट ऑफ ए दैट इज सेकंड इनवर्स ऑर्डर इज इक्वल टू 1। अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जहां पे हमने सिखाया था ऑर्डर और यूनिट ऑफ ए को, है ना, अगर आपको याद नहीं आ रहा। ठीक है, now we know that then we will just plug in the formula P, it is equal to 2.303 divided by K log of initial concentration divided by final concentration. ठीक है, this will be equal to 2.303 divided by K. What is K? 60. Log of initial concentration is 5 grams. And final concentration it is equal to 3 grams. ठीक है, अब बोलिएगा सर कंसंट्रेशन है, आप तो मास ही ले लेते हैं, उसको भी हम समझा देते हैं, लेकिन ठीक है प्लीज क्लियर है, कंसंट्रेशन है ना, बट व्हाट वी आर टेकिंग, वी आर टेकिंग द मास इटसेल्फ। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। अब हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोल्स, 5 ग्राम डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ ए डिवाइड बाय द वॉल्यूम। ठीक है, अब प्लीज अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम वगैरह चेंज होने का कुछ यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है। व्हाट विल बी द फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन विल बी 3 ग्राम डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ ए, बिकॉज ए ऊपर भी है ए नीचे भी है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम से वॉल्यूम बन गया। मोलर मास ऑफ ए इज आल्सो नॉट चेंज, मोलर मास ऑफ ए से मोलर मास ए कट गया। व्हाट इज द रेशियो, 5/3, ग्राम से ग्राम कट गया तो ये आपके पास 5/3 है। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन इफ वी हैव masses we can use mass also, we can use mass also. ठीक है, now what will be the value, 2.303 divided by 60 log of 5 minus log 3. This will be equal to 2.303 divided by 60 log 5 is 0.7 minus log 3 is 0.4. ठीक है, ये वैल्यू होपफुली आपको याद होनी चाहिए या क्लियर रहता है जनरली, याद कर लीजिएगा, लेकिन कुछ वैल्यू बताया ना मुझे तो लॉग करना चाहिए तो आप लोग को देखो मैं उसमें पढ़ाया था हम लोग। जी सर। हाँ, 2.303 into 0.22 upon 60। ठीक है, कर लीजिए इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा। ठीक है, तो दो चीज आपको पता चली, एक ही पता चली दैट फ्रॉम द यूनिट ऑफ ए यू कैन कैलकुलेट द ऑर्डर, यू कैन डिटरमाइन द ऑर्डर। और दूसरा, अगर मास दिया हुआ है तो मास को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट द कंसेंट्रेट। Guys, please send the answer. How much you are getting?
क्या कितना आंसर भाई, 0 से 0 कैसे काटा आपने? ओ माय गॉड, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। डिड यू कट डेसिमल विद द लो? पॉइंट तो आपने 0 से काट दिया क्या? जी सर। हाँ, अरे 60 का 0 कैसे कटा है? मैंने बस 0.22 था ना, तो मैंने 0 को कट कर दिया था। 0 को 0 से कट कर दिया, 0.22 के 0 से 60 के 0 को कट कर दिया। नहीं सर, 66 बचा हुआ था उसका बस, तो मैंने हाँ अच्छा जाके इसका ऐसे होता है क्या भाई? आपने ये किया है, आप बोले देखिएगा जरा, ये कर रहे हैं ना आप, देखिएगा ये 0 और ये डेसिमल ऐसे कटा है, ये ऐसे 0 काट दिया आपने। जी सर, फिर उसको 2.2 कर दिया था। क्या गलत किया? जो किया आपने गलत किया, ठीक है ना? पता नहीं क्या किया आपने, गलत किया, ठीक है। चलिए, इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2.303 into 0.22, you will get the value 0.0, नहीं 0.0 नहीं मिलेगा आपको, 0 में 0.50666, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखिएगा क्या ये आंसर आएगा, डिवाइड बाई 60। देखिए अब इसको क्या 0.50 ले सकते हैं आप, इसको 0.50 डिवाइड बाई 60। अब इस 0 से ये 0 कटता नहीं है भाई वैसे, ठीक है ना? हम जस्ट टेलिंग यू गाइस, नाउ वी कैन राइट 50 अपॉन 60 into 100। ये समझ में आया होगा सबको? ऊपर भी हमने 100 मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके 15 घुसा दिया 100 को नीचे। तो ये 6 आ गया। अब ऊपर और नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? नो, 10, हाँ तो कुछ नहीं जरूरत नहीं। 5/6, if you are going to calculate, 5/6 will be equal to 0.8। 5/6 आप कैलकुलेट करके देख लीजिए तो 0.8 आएगा, डिवाइड बाई 100, दिस विल बी इक्वल टू 0.008 seconds, which will be the answer। अपनी मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं, ये सब तो आपको ठीक है। हाँ ठीक है, सिद्दीका सही है। अन्ना, योर आंसर इज ऑल्सो फाइन आई गेस। हाँ ठीक है, ये भी सही है अन्ना। Raise your hand once you are done copying।
Just waiting for Khadija. Khadija, let me know if you're not done. देखिए अगला सवाल. प्लीज राइट द क्वेश्चन विथ मी, है ना. भैया आपने ठीक कर लिया उसको, समझ में आया आपको क्या गलती हुई थी? जी सर, ठीक कर लिया मैंने. सेकंड सवाल है, इज राइट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 40% complete in 80 minutes. Calculate the rate constant. ठीक है, तो ये परसेंटेज वाले सवाल है अब. ठीक है, देखिए जब भी आपको परसेंटेज दिखे ना, जब भी आपको परसेंटेज दिखे 40% कंप्लीट 80 मिनट चलिए ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना परसेंट कंप्लीट हो चुका है, उस तरह का कुछ हो, आप फट से क्या कीजिएगा, ए नॉट विल बी इक्वल टू 100. ए नॉट कितना हो जाएगा? 100. So please understand what the reaction, what the question is saying. So first order reaction is 40% complete. तो 40% तो हो चुका है रिएक्शन, रिएक्टेड अमाउंट कितना है? 40. तो जो रिमेनिंग होगा इट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 60. ठीक है, बल में क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है कितना? 80 मिनट्स. मिनट्स में ही रहने दीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं है इसको चेंज करने की. रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी उसमें आपको मिनट इनवर्स लिख दीजिएगा, दैट्स इट. आपको ज्यादा उसमें चेंज करने की आपको जरूरत नहीं. नाउ वी हैव k, इट इज इक्वल टू 2. अच्छा देखिए, बेसिक जो आपके पास फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला ये है, kt इट इज इक्वल टू 2.303 log a नॉट बाई a. और डिपेंडिंग ऑन हमको t चाहिए या k चाहिए, हम इक्वेशन को उस तरह से लिखते रहेंगे हमेशा. ठीक है, तो राइट नाउ आई वांट द रेट कांस्टेंट, आई विल राइट k इट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई व्हाट इज टाइम, टाइम इज kt, याद रखिएगा मिनट्स है ये. log of a naught, what is initial concentration? 100 divided by final concentration is equal to 60. 0 से 0 कट गया, 10/6 आ चुका है. आप आगे कर लेंगे, आप लोग कैलकुलेट कीजिए जरा.
नो सिद्दीका, लॉग का आंसर आ रहा होगा, नहीं लॉग का भी इतना आंसर नहीं आएगा। देखिए फिर से देखिए, if you can send the answer on my Okay, WhatsApp, one second. अगर No, WhatsApp sir, भेजिएगा I'll तो just check my calculations again. हाँ हाँ ठीक है ठीक है चेक कर लीजिए। इससे ज़्यादा टाइम आपको देना चाहिए, 2 मिनट और दे। Sir, is mine correct? अच्छा आपने देखा है तो कितनी लग रहा है करेक्ट है? लॉग वैल्यू कितनी आई है आपकी फर्स्ट का? 0.227. ठीक है 0.22। आपने सेकंड वगैरह में कन्वर्ट कर दिया है क्या? No, sir. नहीं ना। फिर 2.303 तो 0.11 कितना आया? 0.25. ठीक है तो 0.25/40 है भाई? Sir, can you repeat? 0.25/40 करेक्ट No, है sir. ना? See, सॉरी uh, sir, I'll send it on WhatsApp. देखिए पूछिए। 80-40 को आपने काटा होगा फिर सिद्दीक इज स्टिल नॉट करेक्ट। देखिए व्हाट्सएप में भेजिए जरा। योर्स 6 हर्षा, देखिए कहाँ मिस्टेक किया आपने। 2.303 अपॉन Yes, yes. Okay. 2.3 तो लिखिए गाइस should be equal to 2.303 divided by 80। इसको अपॉन कर सकते हैं 5/3। ये हो जाएगा log 5 माइनस log 3। ठीक है log 5 माइनस log 3। log 5 की वैल्यू नहीं कर देते हम। log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.7 माइनस 0.48 0.22 है ना? 2.303 डिवाइड बाई 80 into 0.22। now we can write this as 0.11 और इसको कह सकते हैं 40। ठीक है तो देखिए 2.303 into 11 करेंगे 2303 and 2303 ये हो जाएगा 3335 और ये जाएगा 2। अप्रोक्सीमेटली आप 25 0.25 ले सकते हैं इसको। ठीक है 2.303 एंड हाउ डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे देगा डेसिमल पॉइंट। ठीक है मल्टीप्लाई 2.303 into 0.11 दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0.2533 डिवाइड बाई 40। इतना नहीं लेके हम ये ले सकते हैं 0.25 डिवाइड बाई 40। ठीक है अब देखिए ध्यान से व्हाट आई कैन डू 25/4 into 1000। 40 का हमने 0 हटा दिया और 0.25 का डिस्प्ले हटाया तो इधर 100 आ गया। It should be 60, right? 616 नहीं
Who is saying 60? So instead of अच्छा 80, कौन 60 होगा भाई? ये तो 80 है ना. Instead of 80 should be 60. Why? What is 80? ये जो टाइम है ना. अच्छा टाइम 80 सेकंड्स है ना. yes, sir. अच्छा कहाँ है आप? A will be 60 है ना, टाइम नहीं. ठीक है. So 25 upon 4 will be equal to how much? 25 का आधा का आधा. 25 का आधा 12.5. 12.5 का आधा 6.25. 6.25 into 10 to the power minus 3 minute inverse. Copy this down. Raise your hand once you're done. Most of you guys are done. Aditya, let me hear the class. The next type of question. Next type of question also आपका homework है. Let me give you know. Please write it. The first order reaction takes 10 minutes for 25% decomposition. Calculate T half. ठीक है. CL. T half for first order reactor, it is equal to 0.693 divided by K. Do we have K? No, we don't have K. How can we calculate K? K will be equal to 2.303 divided by 9 into log of A naught upon A. अब देखिए यहाँ पे देखिए टाइम आपको दिया हुआ है कितना. टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स. ठीक है. ए नॉट कितना हो जाएगा? ऐसे 30% आ जाए. 100% रिमेनिंग 25% रिएक्शन हो चुकी है. बचा कितना है? बचा है 75. ठीक है. सो यू कैन कैलकुलेट व्हाट
के कैलकुलेट हो जाएगा, हाँ या ना बताएं, बोलो भाई। यस सर। Yes. के हो जाएगा कैलकुलेट, के हो जाएगा, sir. के हो जाएगा तो फिर टी हाफ भी हो जाएगा। सुनो बताइए, यस सर। ये हो जाएगा फिर टी हाफ हो जाएगा ना। ठीक है, इतना लिख लीजिए, उसके बाद अगला सवाल देखेंगे ना, दिस इज होमवर्क, होमवर्क में कर लीजिएगा। इट्स वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी हैव डन, तो उसमें एक फॉर्म में और आ जाएगा, बस दैट 0.6 पे अपन के करना होगा। अच्छा बाय द वे, के अगर आपको ना के को डेसिमल में मत लेके आइएगा, के फ्रैक्शन ओनली, बिकॉज के को फिर यहाँ आके क्या होना है, वंस अगेन इट हैज टू गेट सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो जबरदस्ती के को बिल्कुल डेसिमल पॉइंट में लाने की कोशिश मत कीजिएगा। डन सर। ठीक है, चलिए, जो लोग लिखते हैं वो लिखिए, बाकी लोग जिन लोगों ने लिख लिया है अगला सवाल लिखिए। This is also one of the very favorite question of CBSE to give in the board exam, ठीक है ना। और ये सवाल तो आपको आना ही चाहिए। If you have done chemical kinetics and you don't know how to do this question, that means you have not done chemical kinetics, ठीक है, ठीक है। So that for a first order reaction, time required for completion of 99% of a reaction is twice the time required for 90% completion, और 90% complete, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। So that for a first order reaction, the time required for completion of 99% of reaction is twice the time required for 90% completion। क्या मतलब है इसके, देखिए दो जगह हम लोग टाइम रिक्वायर्ड देखेंगे, टी 90% और उसमें टी 99% देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी टी 90%। जब टी 90% होगा तो ए नॉट, तो जैसे परसेंटेज दिया तो ए नॉट कितना ले लेंगे हम लोग 100, एंड व्हाट विल बी द रिमेनिंग परसेंटेज, टेल मी गाइस। अगर 90% रिएक्ट हो चुका है, रिमेनिंग कितना होगा, बोलो 1%। 10% ना, कितना रिमेनिंग कितना होगा 10% भाई मेरे। 90% ए रिएक्ट कर चुका है तो बचा कितना, 10% सर। बचा, हाँ ठीक है 90 नहीं 10%, ठीक है। चलिए जी, चलिए अब इसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टी 90%। टी 90% will be equal to 2.303 divided by k log of a naught. A naught is how much, 100 divided by a, what is a, 10, तो कट गया। log 10 is equal to 1, तो आपके पास t 90% कितना आया, आपके पास आया 2.303 divided by
K. This is the value of T 90 percentage. Similarly, हम लोग क्या निकालेंगे T 99 percentage. So at T 99 percentage, A naught quality कितना होगा? That will be still 100. What is the remaining amount of A? 90% A, 99% A react कर चुका है, 99% react कर चुका है. कितना बचा है A? How much A is remaining, guys? 1. 1. है ना? एक बचा है. Very good. So T 99 percentage will be equal to 2.303 divided by K log of 100 upon 1. Now, equal to log 100 कितना होता है? अरे पूरा log की कहानी यहीं से स्टार्ट. Log 100 is equal to 2. 2. दूसरा मैं भाई रिवाइज कर ली थी. हाँ 2.30 डिवाइड बाई K into 2. अब अगर देखिए आप, दिस 2.303 डिवाइड बाई K है. Instead of 2.303 divided by K, what I can write? I can write T 90 percentage. आपको दिख रहा है that T 99 percentage it is equal to 2 into T 90 percentage. 2.303 के जगह क्या लिख सकते हैं हम? T 90 percentage. Why? Because T 90 percentage is equal to 2.303 divided by K. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. यस सर. कॉपी कीजिए. बस और देखते हैं. So if half-life of first order reaction is 2 minutes, how long
will take how long will it take take uh, for its initial consumption? How long will it take for the reactant to reach 10 percentage of initial value? Okay. Then the crucible half life of first order reaction is 2 minutes. That means T half दिया हुआ है आपको, that is equal to 0.693 divided by A. ठीक है, तो K यहाँ से निकल जाएगा कितना 0.693 divided by 2. ठीक है, मिनट में आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा, मिनट में आएगा. उसके बाद ध्यान से देखिएगा, how long will it take for the reactant to reach 10 percentage of initial value? तो अभी रिएक्शन के बारे में बात नहीं हो रही, रिएक्टेंट के बारे में बात हो रही है ना. इनिशियल तो आप क्या लीजिएगा, इनिशियल तो आप क्या लेंगे 100. ठीक है, और कहां तक पहुंचना है, ए इट इज इक्वल टू 10 परसेंटेज ऑफ इनिशियल वैल्यू, है ना. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द रिएक्टेंट टू रीच 10 परसेंटेज ऑफ इनिशियल वैल्यू. डज दिस मेक सेंस? जो हमने टिक किया लाइन ए इज इक्वल टू 10 परसेंटेज ऑफ इनिशियल वैल्यू, उसमें नोटेशन दिखाई. यस सर. ठीक है, आप देखिए 10 परसेंटेज का मतलब 10 अपॉन 10% का मतलब क्या 10 अपॉन 100. ऑफ का मतलब इनटू इनिशियल वैल्यू कितनी थी 100. 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 10 ही आ गया, है ना. डायरेक्टली हमने 10 नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा था. आई होप लैंग्वेज से भी समझ में आ जाएगा कि आपके पास रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, राइट. अब उसके बाद बाकी सेम कहानी, आपके पास ए नोट आ गया, ए आ गया, निकालना है आपको कहीं कहीं यहाँ पे निकालना है, टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू रीच 10%, 2.303 divided by k log of a naught by a. This will be equal to 2.303 divided by 0.693 divided by 2 था, इसको into 2 कर देते हैं, into log of a naught का 100 divided by 10. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा. बेसिकली योर आंसर विल बी इक्वल टू 2.303 into 2 divided by 0.693. वैसे 2.303 अप्रोक्सीमेटली ना 3 से कट जाता है ये, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 3 से कट जाता है. तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 20. अच्छा, log 10 will be equal to what? Log 10 will be equal to 1 only ना. और ठीक, आंसर कितना जाएगा 2 by 3, that is equal to how much into 3, 0.666666. कॉपी कर लीजिए जरा.
So it should be 6.68. So you got 2 with 0.6. इसकी वैल्यू 6.6 होगी बोल रहे हैं ना आप? No, sir, like when you simplified it should be 0.3. तो हाँ ठीक है thank you. सही बात है, सही बात है. Will be 0.3 ना? Yes, sir. It will basically 0.3 plus we say 2 into 10 by 3. This would be giving you 6.67. जब आधा ही होने में 2 मिनट लग रहा है तो 90% कम. 6.6. Just give me a second. Raise your hand for the right. Just give me a second. Okay, so everyone is done. चलिए एक ना मतलब थोड़ा एक अच्छा खूबसूरत सा सवाल आपको करते हैं. ठीक है ना? मतलब कंसेप्चुअल और मैथमेटिक्स का जो you will see how different you understand something conceptually and if you want to do the same thing mathematically, how long the mathematical processes and how conceptually you can easily do that. ठीक है, जरा सवाल लिखिएगा. If half life of a first order reaction is x, half life of first order reaction is x, and T4 life of reaction is y. ठीक है. How are x and y related? How are x and y related? अब देखिए ये शायद हमें ना आपके
तुम्हारे थे हाफ लाइफ, तभी हमें थोड़ा सा स्टेप कर दिया था। इसलिए आई वांट टू डू दिस कंसेप्चुअली, तो काफी आसान हो जाता है। We know that the half-life of first order reaction does not depend on the initial concentration. Concentration क्या है, उससे कुछ मतलब है। अगर आपको उसका आधा करना है, यानी कि 100 से 50 का भी आधा वही होगा। अगर आपके पास 50 है तो 50 का 25 से भी उतना ही टाइम लगेगा, एंड इफ यू हैव 25 देन 25 का आधा 12.5 करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाफ लाइफ दैट इज इक्वल टू x। यहां से यहां तक मान लीजिए दिस इज हाफ लाइफ, 1/2 रिएक्शन इज कंप्लीट, और ये कितना हो गया, दिस इज x। ठीक है। अच्छा, अब इफ दिस रिएक्शन इज 3/4 तब तो ये यहाँ पे होगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज y। अगर 10 यहाँ से 1/2 तक आने में अगर आपको x टाइम लग रहा है, ठीक है, तो 1/2 से 3/4 के आने में आपको कितना लगेगा, x ही टाइम लगेगा, बिकॉज इट इज व्हाट, 1/2 का आधा है 3/4, इफ यू कैन सी दैट, ये टू 1/2 का हाफ। तो भाई तो ये आपको लगेगा सर 3/4 तो 1/2 का हाफ नहीं होता है, कि हम बता रहे क्या मतलब है 3/4 का। 3/4 मीन्स 3/4 is complete, ठीक है ना, दैट मीन्स 75% इज complete। ठीक है, तो ये अगर 50% है, यहाँ पे हाफ इज 50%, तो 75% है ना। तो अगर आपके पास ये अगर 100 है, 100 से 50 हुआ, 50 से कितना होगा, ये घट के 25% होगा, है ना। 3/4 आपके पास क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट हुआ, रिमेनिंग अमाउंट कितना है 25। 100, 50, 25 दिस इज द अमाउंट ऑफ रिएक्शन की हम ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं टॉक अबाउट रिएक्शन, तो रिएक्शन अभी 0% कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे 50% कंप्लीट हुआ, यहाँ पे 75% कंप्लीट हुआ। आई होप यू कैन सी दैट। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y? y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। दिस इज द सिंपल रिलेशनशिप। ये बात समझ में आई, हाँ या ना बताएं? यस ऑल ऑफ यू सर। अंडरस्टूड दिस, यस और नो, है ना। अब देखिए इसी चीज को अगर हम मैथमेटिकली करने के लिए जाए, हाँ सर। ठीक है, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टी हाफ, what we can say, A जो होगा, A will be equal to the half of initial concentration, A naught by 2 होगा। So I can write T half जो होगा that will be equal to 2.303 divided by K log of A naught upon A naught by 2। ठीक है, तो A naught कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, you will get this as 2.303 divided by K into log of 2। This is your T half। Now if I talk about for P 3/4, A जो होगा, the remaining concentration of A will be equal to A naught by 4। 3/4 रिएक्ट हो चुका, बचा कितना है 1/4। 1/4 मतलब इनिशियल का 4th क्वार्टर, ठीक है, A naught by 4। So we can write P 3/4 it is equal to 2.303 divided by K log of A naught upon A naught by 4। A naught cancel, 4 ऊपर जाएगा, which will be 2.303 divided by K log of 4। I can write this as 2.303 divided by K log of 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर अगर 2 बाहर आ सकता है, तो सिंपली इक्वल टू 2 into 2.303 divided by K and log 2। अब देखिए 2.303 divided by K log 2 टेक्स टी हाफ, दिस विल बी इक्वल टू 2 into टी हाफ, दिस इज इक्वल टू टी 3/4। टी 3/4 को हमने कहा था कि वो y है 2, और टी हाफ को हमने कहा था कि वो x है, तो y is equal to 2x यहाँ से। Copy this down, raise your hand once you're done।
ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। देखिए थियोरेटिकली कितना आसानी से हो गया ये, विदाउट एनी कैलकुलेशन। Sir, can you explain the first method again? फर्स्ट मेथड, ठीक है, amount ये आपको समझ में आया ना, T 3/4 is 75% complete। Yes, sir. ऑप्शन यहाँ पे ना हम देखिए क्या करते हैं। Here I will be writing the concentration of A और यहाँ पे हम लिखते जाएंगे रिएक्शन। आप समझिए, जब concentration of A 100 है, that means 100% है, that means reaction अभी start नहीं हुई है। Make sense? Yes. Yes, sir. जब रिएक्शन 50% है, तो concentration of A भी 100 से कितना हो जाएगा? 50%। करेक्ट? Yes, sir. Make sense? और इसी में टाइम कितना लग रहा है? X। बिकॉज हाफ लाइफ क्या है इसका? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज x। मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब 3/4 होगा तो कितना हो जाएगा? 75% कंप्लीट। रिएक्शन विल बी 75% कंप्लीट। ऑल्सो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है वो कितना होगा बताइए? 5. 25 ना? क्या कहा आपने? हर्षा? हर्षा Yes, sir. क्या कहा आपने? No, sir, I said 5. नहीं नहीं, वाई नहीं होगा। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। Okay, sir. ठीक है, ओके सर। जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा? 25. हाँ, 25. कैन यू रिपीट दैट? हिंदी में बोलिए, हिंदी में। Sir, I'm not good with numbers. दे आर नॉट गुड विद हिंदी नंबर्स। डिजिट बता दीजिए, डिजिट बता दीजिए। एंड में देखिए आपको क्या समझ है? T5 T5 तो समझ ही नहीं आ रहा। डिजिट बता दीजिए। जैसे आपको अगर लग रहा है T5 तो बोलिए T5। क्या लग रहा है आपको? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग? 65. 65। Sir, I अरे didn't get. डिजिट बोलने को माइक, आपको आवाज आ रही है ठीक से? पहले ये बताइए, Yes, sir. आपके बाद से झटके झटके में आ रही है बताने को। आई एम सेइंग रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है? रिएक्शन 75%. तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा? रिएक्टेंट 25. ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है? No, sir. ठीक, 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? Why? वाई टाइम, ये तो लिखा 3/4। अब ये बताइए, अगर हम 50 से स्टार्ट कर रहे थे, कितने से स्टार्ट कर रहे थे? 50 50. से। ठीक है, तो 50 का आधा कितना है? 25। तो 50 से 25 में कितना टाइम लगेगा? हाफ, हाफ लाइफ में। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है आपको? बात समझ, अगर आप 100 छोड़ दो ना भाई, 100। अब यहाँ पे जो 50, यहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा, जो 50 बचा हुआ है, उसकी कोई ना पता 100 से आ रहे हैं कि 100 से आ रहे हैं। 50 को आधा होने में कितना टाइम लगेगा? हाफ लाइफ। 25 को आधा होने में कितना टाइम लगेगा? बोलिए हर्षा, समझ में नहीं आ रही है? Sir, it will take X अच्छा, by 2, right? No? 80 से 40 में कितना टाइम लगेगा? Half. हाफ, टी हाफ ना, एक्स लगेगा। अगर किसी, वही तो यार, हाफ लाइफ आप भूल गए लगता। हाफ लाइफ क्या होता है देखिए जरा समझा के। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज द टाइम टेकन टू, कंसंट्रेशन को हाफ होने में इतना टाइम लगता है, उसे क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। Half. Yes.